Okay, so it has been told that it is very important to study about the various food chain and food web. See, because sometimes we don't know that in our body or in any organisms का body, if we found the toxic level or the harmful substance, so वो कहाँ से आया है, where it comes from, वो हमें पता नहीं चलता है. Okay, so it might be chances ऐसा होता है कि whatever we eat, if that particular thing was infected by something or they are harmful or they will be having certain harmful substance, so might be वो हमने खाया इसलिए वो हमें ट्रांसफ़र हुआ होगा. So it is because of food chain and food web. Okay, so I can give you one example of bioaccumulation and biomagnification. See, I don't know whether you have heard about this or not, but bioaccumulation is something where we are concerned with the accumulation of toxic level in individual organism. लाइक समझ लो कि ये एक फ़िश है. ओके, सो एक फ़िश के टिश्यूज़ में या तो फिर फैटी टिश्यूज़ में हाउ मच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक लेवल गेट्स एक्यूमुलेटेड और डिपॉजिट और बिल्डअप कितना हुआ है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो वी से इट इज़ अ बायो एक्यूमुलेशन. बट वॉट इज़ बायो मैग्निफिकेशन? सो बेसिकली बायो मैग्निफिकेशन इज़ अगेन द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक लेवल और द सब्सटेंस of the organism which is in the highest trophic level. Okay, understood or not, I don't know. Okay, I will explain you. This is a large fish. You know, I'm saying that this is the first fish, this is second and third. लेकिन जब आप बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल मेंबर में जब एक्यूमुलेशन होता है टॉक्सिक लेवल का, तो आप उसे बायो एक्यूमुलेशन बोल रहे हैं. लेकिन यू नो, अ लार्ज फिश इज़ हैविंग कैपेसिटी टू ईट न्यूमरस फिश. ओके, सो ये क्या करेगा फिश कि बहुत सारे न्यूमरस फिश को खा लेंगे. ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, जितने भी फिश में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक लेवल था वो सारा इसमें ट्रांसफ़र होकर बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो क्या हो गया, मैग्नीफाइड हो गया. ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ बायो मैग्निफिकेशन. सो सी, अगर आप मॉनिटरिंग करके ये स्टडी करते हो कि लार्ज फिश में इतना सारा टॉक्सिक लेवल कहाँ से आया है, सो वो एक दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि हाँ, इस फिश ने जिनको खाया होगा शायद उनमें बहुत सारा टॉक्सिक लेवल होगा जो मिलकर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पर आपको मिला है. सो डेफिनेटली ये किसके थ्रू हुआ, फूड चेन या तो फूड वेब के थ्रू हुआ है. ठीक है, सो वो आपको समझना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाट इट हैज़ बीन रिसेंटली फाउंड और ऑब्जर्व दैट पोल्यूटेंट इन ऑल द इन्वायरमेंट transfer in various organism. अलग अलग organism में you will see that there is a pollutant has been transferred through the food chain and food web. So it's very important to study the food chain as well as food web because see, even one more example I can give you which is very simple. आप जब भी कोई green vegetable खाते हो तो basically you see that whether it is infected by any microbes like fungus या तो bacteria, if you will see that it is having canker or it is having certain spots like lesions, so definitely you will not going to take that because that you are going to eat. So if that particular plant material is infected, so there is a chance that will going to transfer in our system also. Okay, so this will be leads to disease and disturbance of the system. So definitely it is through the food chain and web, so it's important to study even that. Okay, now coming to the last part, the ecological pyramid. Now see, what is ecological pyramid? Let me tell you, pyramid, when I say pyramid, what comes in your mind, what type of structure? Is it this? Yeah, it's correct. Okay, so pyramid, just listen that when you see the pyramid, आपको बेसिकली दो पोल्स दिख रहा है. बेसिकली ट्राईएंगल है, बट यहाँ पर आपको देखना है कि वन एंड विल शो ब्रॉड एरिया, शेड कर देते हैं, और एक टिप पे आपको दिख रहा है जो कि नैरो एंड है. ओके, सो ये क्या इंडिकेट करेगा? ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, ये क्या इंडिकेट करेगा? समथिंग विच इज़ हैविंग लेस इज़ in the narrow region and something which is in a more concentration, number, biomass, energy, whatever in a more, that will be here broad region में. ठीक है, so ये indication ये pyramid हमें देने वाला है further. Okay, so just see that what pyramid will going to explain us about the different kinds of ecological pyramid. Okay, so let us see. Okay, see, we are going to see what exactly this pyramid is.
And then the types of pyramid, which is having the three types: pyramid of number, pyramid of biomass, and pyramid of energy. Okay, so remember one thing I'm telling you, number pyramid जब आप study करेंगे, so you are going to count the number of organism. Okay, you are only going to concern about the organism का number, not the type, not the biomass, not the energy, but only the number, कितना है वो number. Okay, next, biomass में you are going to concern with the biomass, that is dry weight of that particular organism. Here you are not going to focus on the number and energy, only on the biomass, which is called as pyramid of biomass. Third last will be pyramid of energy. So pyramid of energy का मतलब only the energy which transfer from one to the next trophic level. Here we are not going to see for the number and biomass, but only the energy. Okay, so what are all those pyramid types that we will see further. Okay, it's very interesting. So yeah, let us see for that. See, food energy transfer from the one to the next trophic level, that already you know. But when there is a transfer of energy from one to the next trophic level, does all the energy will transfer from one to the next trophic level or in successive organism? Definitely no. Most of the energy get lost as a heat. Only small amount of energy will transfer from one to the next trophic level. So this is a part of energy flow which I am going to take in one of the PPT. So don't worry. Just remember that I can give you example here again, that like this is a plant, and through the sunlight or the photosynthesis process, they are producing the food as an energy source. And you know, this plant will be taken as a energy source by the herbivore or some consumer. Okay, so whatever the energy was there in the plant, does all the energy will going to transfer in the consumer? No, small amount of energy will be transferred from one to the next trophic level. And when this part or the primary consumer का energy is taken by next, so definitely यहाँ पर वो और ज़्यादा कम हो जाएगा. तो धीरे धीरे what you will find that when you will successively seeing the next to next trophic level, the energy will going to decrease. It will never be going to increase definitely, और वो constant भी नहीं रहेगा, it will going to decrease. That you have to remember. So क्या आपको समझ में आ रहा है कि when you say that energy level धीरे धीरे decrease होता है from going one to the next trophic level, so it can be beautifully explained by this pyramid, है ना. Let me make here partition. जस्ट इमेजिन यहाँ पर सारे प्रोड्यूसर्स हैं यानी कि प्लांट्स हैं, यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर है यानी कि हर्बीवोर्स हैं, और यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं. ओके, सो सी यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, प्रोड्यूसर्स ऐसी जगह पे स्पेसिफाई किया है जहाँ पर ब्रॉड एरिया है ट्रियांगल का. इसका मतलब है प्रोड्यूसर्स में एनर्जी सबसे ज़्यादा है. बट जब ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स के द्वारा लिया जाता है, सो आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि कंज्यूमर्स में जाते जाते एनर्जी थोड़ी कम हो गई है. देखो नैरो हो रहा है ना, एंड देन वो और भी ज़्यादा अप में जब जा रहा है हाईएस्ट कंज्यूमर लेवल पे, तो वो और ज़्यादा कम हुआ है. इसका मतलब दिस नैरो पार्ट ऑफ पिरामिड इंडिकेटिंग दैट हियर लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी देयर एंड द हाईएस्ट एनर्जी विल बी towards the producer. Okay, so I hope you understood the broad area of triangle indicates highest energy and the top wala tapper will be lowest. Okay, now see, coming to the next part, this is the same thing what I have explained you with this rough diagram. The energy level gradually decreases, you know, they gradually tapers in the food chain, which forms a pyramid like structure, and that beautifully you can see in the triangle shape. Thus the graphical representation of this relationship between different and various trophic level of the food chain is called as ecological pyramid or the food pyramid. Now one more thing which can come in MCQ question is, it's also called as Eltonic pyramid. Why? Because this design has been first given by the Charles Elton. So इनके वजह से ये नाम है Eltonic pyramid. Okay, so it has been given the name on the by this Charles Elton. Okay, so it's called as a ecological pyramid or food pyramid, and also the Eltonic pyramid by the name of Charles Elton, it has been given. Now
See the types, which is very interesting, and the last part of this presentation. So please focus here. Now the types of ecological pyramid में first is a pyramid of number, biomass and the energy. Let us see now about the individual type of pyramid. What does it indicate, what it explains, which means here you will see that in some of the ecosystem there is a straight triangle which is called as upright. Remember, upright triangle or pyramid. And in some of the ecosystem you will see ulta triangle which is called as inverted. It is an inverted triangle. Okay, so you will find you will come to know now why the triangle will be inverted in some of the ecosystem. Definitely it will going to indicate something. Okay, so let us see for that. See the pyramid of number. Okay, you know number, it means you are going to count the number of organism in individual trophic level. What is individual or each trophic level? Producers, कंज्यूमर्स एंड कंज्यूमर का डिफरेंट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी लेवल. तो उन सभी में आपको फोकस करना है अबाउट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितना है. ओके, नाउ सी वी आर गोइंग टू सी द पिरामिड इन द डिफरेंट इकोसिस्टम लाइक ग्रासलैंड, पॉन्ड, ट्री एंड फॉरेस्ट. हमको कैसा पिरामिड यहाँ मिलता है दैट वी आर गोइंग टू सी. ओके, नाउ सी दिस इज द एग्जाम्पल where of pyramid of number, where you see that these are the producer, the green plants. Okay, the green plants are more in number, and as compared to green plants or the producer, the primary consumers are somewhat less in number, which is followed by the secondary consumer, which is much less than the primary consumer, and finally the higher tertiary consumer is the least in number. Okay, कभी आपने नोटिस नहीं किया होगा ऐसा कि सिर्फ एक ग्रास है और बहुत सारे हर्बीवोर्स हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, राइट? सो इट मीन्स व्हाट द प्रोड्यूसर नंबर विल बी मोर और दे आर न्यूमरस, एंड देन इट विल बी फॉलोड बाय कंज्यूमर्स का डिफरेंट लेवल लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, जो धीरे धीरे आपको दिख रहा है कि नंबर उनका डिक्रीज होते जा रहा है. सो दिस मेक्स अ पिरामिड. सी अ ब्रॉड रीजन मतलब ज़्यादा नंबर, धीरे धीरे इट इज़ कमिंग टू द लेस नंबर, सो इट मेक्स अ पिरामिड. ओके, so this topmost का tapering end will indicate the least number of organism, and broad region of lowermost part will indicate the numerous or the large number of organism. Okay, so that you have to understood here with the pyramid structure. Okay, now next is in a grassland ecosystem, same thing you have found, you can find here that see the pyramid is upright, straight है. When I say grassland, you know पार्टीशंस क्यों बना है यहाँ पर, फॉर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, वो आपको समझना है. हाँ, यहाँ पर है प्रोड्यूसर, हियर इट इज़ अ प्राइमरी फर्स्ट कंज्यूमर, सेकेंड कंज्यूमर दैट इज सेकेंडरी, एंड थर्ड कंज्यूमर दैट इज टॉप कंज्यूमर. सेम थिंग हैपन्स, ग्रास इज़ देयर जो कि सबसे ज़्यादा नंबर में है, एंड देन द ग्रास इज़ ईटन और टेकन बाय द रैबिट, माउस, स्क्वेरल्स, एफिड्स, लाइक डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट primary consumer, so they will be less in number as compared to previous. Okay, and when you will go to और भी ऊपर का trophic level, you will find the snakes and lizard will less number as compared to previous वाला, and finally the hogs which are least in number. Okay, so that indicate that in the grassland ecosystem the pyramid will be always upright. Okay, now next the pond ecosystem. See, it's something different ecosystem, as you already know now about the pond ecosystem में आपने food chain के बारे में study किया. So it's about the water body where you know that fish आपको मिलेगा, phytoplanktons मिलेगा, और फिर कुछ birds हैं जो fish को pick up करके लेके जाते हैं. तो इस प्रकार के आपको different organisms मिलेंगे. ठीक है, so let us see the phytoplanktons जो again बहुत ज़्यादा है. See, sometime you will not be able to see those plants with our naked eyes. Why? Because some of the algae will be microscopic, but still we have to count it here, because even the microscopic algae are having capacity to produce the food, okay, by photosynthesis, as they are having green pigment. So even that algae will be acting as a
primary source of energy for rest of the organism. So let us consider even that you have to. Okay, now these are the phytoplankton ka channel where the number are more, and then small fish less than the producers, large fish आपको भी पता है less होता है as compared to small fish. Carnivore birds, यानी you have been seen that birds they come towards the water bodies and they pick the fish and then they fly and then they eat those fish and all. Okay, so कभी आपने ऐसा तो नहीं देखा होगा कि बहुत ही कम फिश है 2-3 और एक्सेट्रा एंड बर्ड्स बहुत ज़्यादा है. सो डेफिनेटली आप यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होते जाएगा एज यू आर गोइंग टू द हायर ट्रॉफिक लेवल इन पॉन्ड इकोसिस्टम. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. नाउ नेक्स्ट, सी somewhat different है ना. Here you will see in the tree ecosystem the pyramid will be inverted. प्लीज़, inverted का मतलब होता है उल्टा पिरामिड आपको दिखेगा. ओके, नाउ वाई इट इज़ इन्वर्टेड फॉर्म में है, वाई इट इज़ लाइक दिस, दैट यू हैव टू थिंक. सी, when I say tree ecosystem, tree is I'm talking about the single tree. Even that single tree will be acting as a ecosystem. If you if you have seen our previous wala video lecture, I have told you that ecosystem may be a small drop of water, or even it may be a ocean, sea and all, forest, etc. Okay, so even this one tree, a single tree, may support various birds, bats, etc. for their nesting and all. Okay, or the shelter. So you have to consider this single tree as a ecosystem for many organism. So see, one tree is there, so number is only 1. So यहाँ पर वो least है, बहुत कम. But when you talk about the birds, आपने भी देखा है एक सिंगल ट्री पे बहुत सारे बर्ड्स हो सकते हैं. सो ज़्यादा नंबर हो गया, इसलिए यहाँ पर देखो एरिया भी ब्रॉड हो रहा है. एंड देन इन द इंडिविजुअल बर्ड अगर आप देखेंगे तो पैरासाइट्स और भी ज़्यादा हो सकते हैं. सी व्हाट इज़ पैरासाइट, आई कैन गिव यू एग्जांपल ऑफ केटल्स. आपने केटल्स में देखा होगा मेनी, एक इंडिविजुअल केटल में बहुत सारे लीच आउटसाइड बॉडी से अटैक हो जाते हैं, है ना. ऐसा तो नहीं है कि सिंगल केटल में आपको एक ही लीच मिलेगा, है ना. न्यूमरस लीच में stuck to the body of an individual cattle. So parasites are many. Okay, so I can say in an individual bird there may be a many parasite. तो यहाँ पर नंबर और बढ़ जाता है. And finally endozoic parasite. So when we talk about the ectozoic parasite, एक इंडिविजुअल एक्टोजोइक पैरासाइट्स की बॉडी के अंदर यू विल फाइंड मैनी पैरासाइट्स. ओके, सो दैट्स वाई हियर अगेन द रीजन बिकम मोर ब्रॉड बिकॉज इट इंडिकेट्स द न्यूमरस, यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ पर है और सबसे कम नंबर यानी कि सिंगल ट्री वॉज देयर विच इज़ एक्टिंग एज अ इको सिस्टम हियर. सो वन ट्री वॉज सपोर्टिंग मैनी बर्ड्स and these many birds will be having many parasites and so on. So like this ecosystem, tree ecosystem shows something different pattern of pyramid called as inverted pyramid. That you have to remember because it's very unique, and I hope you easily can remember because one tree supports many of the organism, birds, etc. for shelter and all. Okay, so this is about the tree ecosystem. Now the second type of pyramid, that is pyramid of biomass. See, you have to focus on this term biomass. When I say, now we are not at all going to focus on the number because it was the first type. Now the biomass means whatever the dry matter is present in an ecosystem. So biomass is total dry weight of dry matter present in an ecosystem at any time. Just let me give you one example. अगर आपने एक हाथ में एल्गे लिया हुआ है एंड नेक्स्ट में आपने शार्क लिया हुआ है, तो यू नो किसका बायोमास ज़्यादा होगा? डेफिनेटली शार्क का ज़्यादा होगा, है ना. तो इसका मतलब सी, अगर मैं एल्गे की बात करती हूँ, सो एल्गे का बायोमास अगर कम है और अगर शार्क का ज़्यादा है, तो आपको मालूम है एल्गे हमेशा प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है लेकिन उसका बायोमास कम है, यानी कि यहाँ पर आएगा, राइट. लेकिन आपको हमेशा शुरू करना है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल लोअर से और अपर में जाना है. इसका मतलब आपको बायोमास में किसी इकोसिस्टम में शायद
उल्टा पिरामिड भी मिलने का चांस है, बिकॉज बायोमास ऑफ एल्गे अगर लेस है तो वो इस टैपरिंग एंड में आएगा, और शार्क जो कि बहुत ज़्यादा बायोमास जिसमें होता है तो वो इस ब्रॉड रीजन में आएगा, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ जाएगा आपको। द पिरामिड शोज टोटल बायोमास ऑफ organism at each trophic level. So let us see, in the terrestrial ecosystem, pyramid will always be upright. What is upright? Straight pyramid, not inverted. Okay, क्यों ऐसा है कि terrestrial ecosystem में pyramid हमेशा upright होगा? Definitely because producers are having maximum biomass. Primary consumer will be having less in number, and finally which is followed by the tertiary will be having more less. So this will be definitely showing you a pyramid of in upright form. Okay, so let us see here terrestrial ecosystem. See the can you see this grasses and here the trees plant. ओके अगर यहाँ पर ग्रास है इसका मतलब ये कौन सा इकोसिस्टम होगा? ग्रासलैंड। ग्रासलैंड है फिर भी वो टेरेस्ट्रियल का ही पार्ट है। ट्रीज मतलब वो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है जहाँ पर अगेन वो टेरेस्ट्रियल का ही पार्ट है बिकॉज इट इज़ अ लैंड। ओके सो फर्स्ट लेट अस सी दिस वाला पार्ट। द ग्रास एंड क्रॉप्स आर देयर, ओके, विच आर हैविंग अ मोर बायोमास, बिकॉज नंबर बहुत ज़्यादा है तो बायोमास भी उनका ज़्यादा होगा, एंड दैट इज़ टेकन और ईटन बाय द रैबिट और प्राइमरी कंज्यूमर जिनका बायोमास लेस हो रहा है, एंड दैट इज़ फॉलोड बाय अगेन द लिजार्ड्स एंड स्नेक विच इज़ हैविंग अगेन लेस दैन द previous wala organism, and finally the hawks which is having much more less or least biomass. Okay, so this is about the grassland ecosystem ka biomass upright pyramid. Now you can see the tree and plants which is acting as a primary producer here, and this is eaten by or taken as a source of energy for the deer, elephant, birds, etc. All those are considered as a primary consumer, which is taken by fox, lizard, snake as a secondary consumer. Okay, and finally the lion which is a topmost consumer. Okay, but आप जब trees and plants की बात करते हैं multiple है यहाँ पर, and then उनका biomass ज़्यादा रहेगा as compared to top consumer. Okay, so that's why you can see that this broad and tip का narrow region, it indicates the less and more biomass in different ecosystem. Okay, now see, in aquatic ecosystem the pyramid of biomass will be inverted. This is somewhat different. See, inverted मतलब यहाँ पर उल्टा pyramid रहेगा. Why it will be inverted, that we are going to see. Okay, so let us see in the okay. See, in aquatic, that is water body, you know, the in water body you will be having the carnivore fish and then small fish, phyto and zooplanktons. Okay, now see, जैसे कि मैंने आपको पहले ही example दिया था, algae, when we talk about the algae as a producer, they will be having less weight as compared to fish and all. Okay, and then this algae is taken as an energy source for the next trophic level का consumer which is having more बायोमास, वो धीरे धीरे ब्रॉड रीजन होगा, एंड फाइनली द कार्निवोर का लार्ज फिश, कार्निवोरस लार्ज फिश विल बी हैविंग बहुत ज़्यादा बायोमास. ओके, सो दिस विल शो द इन्वर्टेड पिरामिड. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पिरामिड ऑफ एनर्जी. सबसे ज़्यादा ईजी आपको लगेगा पिरामिड ऑफ एनर्जी, बिकॉज ऑलवेज इन एनी काइंड ऑफ इकोसिस्टम you have to remember that when there is a transfer of energy from one to the next trophic level, the energy will be going to decrease. So see, it is always upright because this broad region of pyramid will show highest energy, which is always in the producer, and in a primary consumer, when producer is taken as a energy source by primary consumer, the energy will going to decrease. Okay, and then the secondary consumer will utilize this primary consumer. Again there is a transfer of food from the primary to consumer to secondary consumer, and so on. So the energy will going to successively decrease till the highest trophic level. Okay, so it means what? You have to understand this, that amount of energy transfer through the food to successive higher trophic level become less and less. Okay, so that's why always you will see that the pyramid will be
इन अपराइट फॉर्म, हमेशा वो स्ट्रेट रहेगा, अपराइट रहेगा. ओके, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इफ़ द प्रोड्यूसर इज हैविंग 100% ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हेन इट गेट ट्रांसफर इन द प्राइमरी कंज्यूमर, only 10% of energy is transferred from the plants or the producer, and which when again this primary consumer is taken by the secondary consumer, only 1% will be transferring, rest of all will be lost in a form of heat, and finally the tertiary consumer mein it will be 0.1. Okay, so this indicate that as per the as we go higher to the organism in trophic level, the energy will going to decrease. Okay, and always remember you have to start your first trophic level from the base. ओके, सो डेफिनेटली अगर आप बेस से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्लियरली समझेगा वेदर द पिरामिड विल बी स्ट्रेट अपराइट और इट विल बी इन्वर्टेड. Okay, so during the transfer of food energy, you have to remember that 10% of energy will be there, and then so you can see the pyramid will always be upright in any kind of ecosystem, whether it may be forest, a pond or any. Okay, so that is about the different kind of food chain, food web and even food pyramid. Now the last part, functional aspects of ecosystem. So हमने ये जो भी स्टडी किया प्रीवियस वीडियो लेक्चर में और यहाँ पर फूड चेन, वेब एंड पिरामिड के थ्रू, what we understood. Okay, we understood about the ecosystem. See, it's very important part. Ecosystem, I'm again reminding you, it is actually about the biotic and abiotic component. Okay, so it doesn't only include the biotic and abiotic components separately, but also we study about the interaction in between those biotic and abiotic component. Okay, so definitely ecosystem is about interactions in between living and non-living. So there is a energy flow from one to the next trophic level. It also explains us about the nutrient cycles and also the regulation or stability of organism as well as environment. Okay, so that's what about the ecosystem, concept of it, components of it